Hello everyone. Today we will start our second chapter of history. Okay? The name of the chapter is Europe and India. In this chapter we will see the relation between the European country and the how the European came to India and how they started ruling in our country. Okay? So first we will take the background. What are the situation, what were the condition on the basis this long journey happened. Okay? So let's begin with it. During the modern period, the various happenings in Europe has its impact on India. Therefore, while studying the period of modern Indian history, we have to study the events happening in Europe during this period. What is impact? Impact means effect. Okay? सो पास्ट में यूरोप में जो चेंजेस हुए उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, उसका बहुत ज़्यादा असर हमारे अपने हिस्ट्री, हमारे अपने कल्चर और ट्रेडिशन पे पड़ा हुआ है. सो बिफोर लर्निंग दी स्टोरी और दी चेंजेस दैट हैपेंड इन आवर कंट्री, वी विल टेक बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ द यूरोप. ओके, पीरियड ऑफ रेनेसांस. व्हाट द रेनेसांस मीन्स? रेनेसांस मीन्स रिवाइवल, रीबर्थ, कुछ नया फिर से होना. तो ये टाइम था जो 13th to 16th सेंचुरी का पीरियड था. यूरोप में बहुत कुछ चेंज हो रहा था, नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे, नए नए टेरिटरीज इन्वेंट हो रहे थे या बाउंड्रीज को एक्सटेंड किया जा रहा था. टेक्नोलॉजी हो, मशीन्स हो, ये सब चीज़ें यूरोप में इतना ज़्यादा फैल रहा था जिसका असर सिर्फ यूरोप में नहीं पूरे दुनिया में देखने को मिल रहा था. Okay, so that's why this period is called as a period of Renaissance. Okay, in history of Europe, the last phase of medieval period, that is the 13th to 16th century, is known as the period of Renaissance. During this period, Reformation. What is Reformation? Change. During this period, Reformation, religious reform movement, and geographical discoveries led the foundation of the modern era. What did led the foundation? Started. कहीं ना कहीं मॉडर्न पीरियड की शुरुआत यहीं से हुई. Hence, this period is known as the age of Renaissance. That's why this period is known as age of Renaissance. During this period, in the field of art, architecture, philosophy, etc., there was a revival of Greek and Roman tradition which gave momentum to an overall development. तो ये चेंजेस है हर फील्ड में देखने को मिल रहा था, चाहे वो आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो. वी नो आर्किटेक्चर, राइट? डिजाइन, प्लानिंग, इवन द फिलोसफी. व्हाट इज फिलोसफी? आइडियाज, बिलीफ. तो ये सब में हमें एक रिवाइवल दिख रहा था. रिवाइवल समझते ना, फिर से कुछ नया रिक्रिएट करना, रीबर्थ, कोई चीज नया आना. तो सोसाइटी में एक नई तरीके से बन रही थी जहाँ पे रिलीजन ये सब का इम्पोर्टेंस इतना नहीं था. लोग ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को रिस्पेक्ट दे रहे थे. लोग लड़ाई के बदले इन्वेंशंस के बारे में बात कर रहे थे. ड्यूरिंग द रेनेसांस, ह्यूमैनिटेरिज्म वाज गिवन ग्रेट इम्पेटस. व्हाट इज इम्पेटस? इम्पोर्टेंस, वैल्यू. तो लोग ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस दे रहे थे? ह्यूमैनिटेरिज्म को, ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को. There was a change in the outlook of treating each other as a human being. Outlook मतलब लोगों का behavior, लोगों का सोच had given a completely change. People think about the human being. They treated the men, not they are comparing the people for their origin of birth, not the person distinguishing about their religion. Here, if a person has done some innovation, has brought change, so he or she should have a respect in the society. Instead of religion, man became center point of all ideologies. What are ideologies? Thinking, right? So now a situation has been changed. The people, the society, in a society, they are not giving importance to the religion. They are given importance to the thinking, ideologies. Okay, and that brought a change, a momentum in the society. What does the momentum means? Momentum means speed. Momentum means speed. The reform movement spread throughout all sectors of human life. Through knowledge, science, as well as different sections of art, we can observe the discoveries of reform movement. So this change has been seen in every aspects of life, in every field.
The art and literature of Renaissance period depict sentiments and emotion of human being. The art and literature. What is literature? The written work. Maybe any thoughts or stories or the books. So there has been a depiction. What a depict? A show or display. So there was a display of the humanity, right? Here humanity given the most importance. पहले क्या होते थे लोग कहानी किस पे लिखते थे माइथोलॉजी पे माइथोलॉजी मालूम है ना द स्टोरी रिलेटेड टू गॉड इवन द किंग बट अभी कैसा है लोग ज़्यादा इंसानियत के बारे में समझ रहे हैं लोगों के थॉट्स उनके व्यूज़ वो क्या सोच रहे हैं कैसा मान रहे हैं ये सब की बातें लिख रहे हैं लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस इन लोकल लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द कॉमन पीपल और जो लिटरेचर है जो भी राइटिंग्स हो रहे हैं देयर शुड बी हैपन इन द लोकल लैंग्वेजेस तो कि जो कॉमन पीपल है वो भी पढ़ सके ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही फ्रेंच में या जर्मन में लिखे जा रहे हैं जो कंट्री में जो लोग ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसमें ये सारी लिटरेचर्स को भी लिखा जा रहा है या फिर ट्रांसलेट किया जा रहा है ड्यूरिंग 1450 AD जोहानस गुटेनबर्ग फ्रॉम जर्मनी डिस्कवर्ड द प्रिंटिंग प्रेस 1450 AD में जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ और उसका इन्वेंशन करने वाले कौन थे जोहानस गुटेनबर्ग इससे फ़ायदा क्या हो गया कि जो प्रिंटिंग का काम है बहुत ही फास्ट हो गया पहले कैसा होता था लोग लिखते थे इसमें क्या होता था नंबर ऑफ कॉपीज कम होते थे ना अब प्रिंटिंग से तो अगर हम कितनी भी चाहे कॉपी बना सकते हैं दुनिया भर में हम उस अच्छे बुक को या अच्छे थॉट्स को स्प्रेड कर सकते हैं ड्यू टू दिस डिस्कवरी न्यू आइडियाज कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज रीच टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी और इसकी वजह से दुनिया भर में नए नए कॉन्सेप्ट नए नए नॉलेज थॉट्स स्प्रेड होने लगे ओके Here we had an information of Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci was a great person. He was a talented person in every field. But he was world famous for his painting. And out of that is two famous painting. The Mona Lisa and the Last Supper was very much important. Still people remember those as the world's best painting. आप गूगल में सर्च करो मोनालिसा और लास्ट सपर की जिसमें आपको मालूम पड़ेगा ये जो पेंटिंग है आज भी लोग इसको कितना पसंद करते हैं ओके लेट्स क्विकली हैव अ इंफॉर्मेशन अबाउट द लियोनार्डो दा विंची लियोनार्डो दा विंची इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द पीरियड ऑफ रेनेसांस सो ये रेनेसांस पीरियड में लियोनार्डो दा विंची ही इज कंसिडर्ड एज अ ऑल राउंड पर्सनैलिटी मीन्स ऑल राउंडर हम कैसे क्रिकेट में बोलते हैं कि ये प्लेयर ऑलराउंडर है ही इज बेस्ट इन बैटिंग ही इज बेस्ट इन फील्डिंग ही इज बेस्ट इन बॉलिंग राइट सो इन द सेम वे लियोनार्डो दा विंची वाज आल्सो अ ग्रेट पर्सन इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन एवरी फील्ड ही वाज वेल वर्स्ड व्हाट वेल वर्स्ड ही वाज एक्सपर्ट in different branches of science and art. He had mastery over varied subjects such as the sculpture, architecture, mathematics, engineering, music, astronomy, etc. So he was expert in all field. Maybe it's architecture, sculpture, astronomy, in every field. We know the sculpture, statue making. Astronomy means the study of planets, sun sign, right? The movement of stars. That is called the astronomy. But he became world renowned as a painter. What a renowned, famous. His paintings of Mona Lisa and the Last Supper became immortal. What is the immortal? Which cannot die. What does it mean immortal? Which cannot die. Okay? Okay, come to the next topic. Religious reform movement. As we already discussed, there was a great change in the society in every field. So religious में भी बहुत ज़्यादा changes आया. लोगों के thoughts, लोग इतना ज़्यादा religion को importance नहीं दे रहे थे. The independent intellectuals. What are independent intellectuals? The people, the intelligent people, attacked the old religious ideologies of Roman Catholic Church. तो जो समझदार लोग थे वो ये पुराने ट्रेडिशनल कल्चर्स को वो नहीं मानते थे इवन दे स्टार्टेड टू से अगेंस्ट दोज illegal cultures or illegal treatment that done by the churches. The Christian priests were taking advantage of the ignorance of the people and they were indulged in unnecessary ritual. What is indulge involved? So जो पुराने टाइम के जो चर्च के प्रीस्ट थे वो अननेसेसरी रिचुअल्स में लोगों को बहकाते थे बोलते हैं ना अंधविश्वास ब्लाइंड फेथ
Right? We have seen so many movies in the past like PK or the Oh My God, where we had seen how these people make us fool, right, on the name of God. They looted the people in the name of religion. So these people looted the common people or the innocent people on the name of God or the religion. The movement that began against it is known as religious reform movement, and such kind of movement is called as a religious reform movement. Due to this movement, human freedom and rationalism gain more importance, and because of that, human freedom, rationalism, what is the rationalism? Equality, equal treatment had gained the more importance. Okay, so these are the changes that brought a huge amount of change in the society. Next, geographical discoveries. Also, there has been a lot geographical discovery happened during that period. In 1453 AD, the Ottoman Turks captured Constantinople. Constantinople is the name was the place, a territory. Now it is called as Istanbul. What happened? That particular territory was under the control of Byzantine Empire. And when Ottoman Turks, the Turkish kingdom, attacked and they won that territory, they blocked that route. And that route was very much important for the transportation between Asia and Europe. In 1453 AD, the Ottoman Turks conquered Constantinople. Nowadays we know it as a Istanbul, which was capital of Byzantine Empire. The overland trade routes joining Asia and Europe went through this city. Since the Turks blocked this route, there was a need of finding alternative. What is alternative? Another option. Since the Turkish Empire had blocked that route, so European traders need a new route to continue the trade with Asian countries, right? So they started to find a new trade route. Finding alternative trade route for the European countries to reach Asia. This led to a new phase of geographical discovery. And because of that, a new phase of geographical discoveries begin. Correct?